और विज्ञान अनात्म है। इसको बुद्धि के स्तर पे और फिर अनुभव के स्तर पे जानने का प्रयास चल रहा है। नाना प्रकार से हमने समझने का प्रयास किया। ध्यान की विधि में यदि हम सारा एफर्ट छोड़ दें, तभी हम कहते हैं बार बार ओपन अवेयरनेस, मतलब हमने सिर्फ इंटेंशन बनाया कि जो कुछ शरीर और उसके भागों में मन में होगा उसको ध्यान का हमारा इंटेंशन है, बस इतना ही। कोई और एफर्ट हम नहीं करते। तो स्पष्ट हमें महसूस होने लगता है कि विज्ञान भी अपने आप जाग रहा है, वेदना भी अपने आप जाग रही है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। उसको जानने का काम भी विज्ञान कर रहा है, और विज्ञान भी है रूट लेवल पे एक यूनिवर्सल फैक्टर है जो हमारी चेतना है, बेसिक कॉन्शियसनेस है हर एक जीवित प्राणी में। वही हमारे शरीर के थ्रू मैनिफेस्ट होती है इन टर्म्स ऑफ, जिसको हम पर्सनल कॉन्शियसनेस कहने लगते हैं, और फिर वो इंद्रियों के माध्यम से चक्षु विज्ञान, श्रोत्र विज्ञान वगैरह वगैरह। ये बात हमको अनुभव करने की आवश्यकता है। उसके लिए हम अगर सब एफर्ट छोड़ के चुपचाप बैठ जाएं, तो देखेंगे अपने आप जो हमारी नेचुरल इनेट एबिलिटी है जानने की, नोइंग एबिलिटी चेतना की, अवेकन अवेयरनेस जो लुम्पो कहते हैं, वो अपने आप काम करेगी और हमें मालूम पड़ने लगता है क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है। आवाज़ आती है तो आवाज़ और सुनाई दे रही है, स्मेल आती है तो स्मेल मालूम पड़ती है। हम अपनी तरफ से कुछ न करने का एक संकल्प ले लें तो फिर और स्पष्ट होने लगता है कि ये सब अपने आप हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं देख रहा हूँ, अपने आप देखा जा रहा है। तो ये बात इतनी काउंटर इंट्यूटिव है कि इसको बार 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 देखेंगे तब थोड़ा समझ में आने लगता है। तो थोड़ी देर उस तरह से ध्यान करते हैं।
पुरानी आदत के कारण चेष्टा जागती है, इधर देख लो उधर देख लो, अटेंशन ऐसे कर लो, तो वी जस्ट बिकम अवेयर एंड डोंट डू एनी एफर्ट। जैसे ही एफर्ट करने का मन करता है, पुरानी आदत है, वैसे ही सजग हो जाएंगे और एफर्ट नहीं करेंगे। बस इतना ही एफर्ट करना है कि हम कोई एफर्ट ना करें। जहाँ कहा करते थे कि साधना के लिए कुर्सी ले लो, कमरे में बैठ जाओ, दरवाजे बंद कर लो और देखो कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मतलब मन में क्या हो रहा है, क्या अनुभव हो रहे हैं, बस देखते रहो, कोई प्रतिक्रिया न करना। हमारा उद्देश्य यहाँ पे समझना भी है, तो इस सेंस में समझना कि क्या हो रहा है, अपने आप ही। कभी यहाँ कुछ काया विज्ञान जागता है, कभी हाथ पे, कभी पेट पे, कभी सांस मालूम पड़ने लगता है, कभी पंखे की आवाज सुनाई देती है, कभी पंखे की हवा शरीर पर लगती हुई महसूस होती है। तो जो भी हो रहा है हम देख रहे हैं कि अपने आप विज्ञान जाग रहा है और उसके साथ वेदना जाग रही है। पंखे की हवा बड़ी प्रिय लग रही है, पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, तो कंट्रास्ट साथ साथ चलता है, मालूम पड़ता रहता है। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि क्या कहाँ पे क्या वेदना हो रही है उसको समझे, उद्देश्य ये है कि उसके स्वभाव को समझ कि वो बदलता रहता है, विज्ञान बदल चेंज होता रहता है, कुछ कभी खुश जागता है। बार 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 ऐसे अभ्यास करते हैं तो सतीपट्ठान में भगवान की जो वाणी है वो स्पष्ट महसूस होने लगती है, स्पष्ट अनुभव होने लगती है। जैसे भगवान कहते हैं वेदना के बारे में कि साधना करते करते ऐसी स्थिति आती है कि साधक कहता है अति वेदना थी, पनस्य सती पच्चुपट्ठिता होती, यावदेव ज्ञानमत्ताय पटिसति मत्ताय, अनिश्चितो च विहरति न च किंच लोके उपादीयते। अति वेदना थी, अरे वेदना ही तो है, अपने आप जागती रहती है, कभी प्रिय कभी अप्रिय, कभी कुछ, कभी इधर कभी उधर, कभी इस द्वार पे कभी उस द्वार पे। तो अति वेदना थी या पनस सती पच्चुपट्ठिता, इतनी सती प्रतिष्ठित हो जाती है, स्पष्ट उसको लगने लगता है इसमें मैं और मेरा कुछ नहीं है। और फिर साधना करता करता कब तक, यावदेव ज्ञान मत्ता है पटिसति मत्ता है, केवल ज्ञान और केवल सती रह जाती है, मैं का भाव बिल्कुल क्षीण हो गया। तो अनिश्चितो च विहरति, अनाश्रित होके विहार करता है, न च किंच लोके उपादीयते, इस लोक में किसी भी लोक में न शरीर पे न बाहर किसी भी चीज के प्रति कोई उपादान नहीं।
तो मुक्ति के करीब पहुंच रहा है। तो हम छोटा सा कदम उस डायरेक्शन में ले रहे हैं ताकि मुक्ति के मार्ग पे तो चलें। तो हमारा प्रयास ये कि जो अनुभव हो रहा है उसके अनित्य स्वभाव की ओर ध्यान दे रहे हैं, अनुभव की डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। कैसी वेदना हो रही है, ऐसी उसकी फाउंडेशन में कौन सी संवेदना है, कौन से धातु उठ रहे हैं, केवल अनित्य की ओर ध्यान दे रहे हैं और जान रहे हैं कि देखने की क्षमता भी जो है वो एक नैसर्गिक क्षमता जो है हमारी, वहाँ से उत्पन्न हो रही है। तो वी ट्राई टू अडॉप्ट द पोस्चर ऑफ प्योर नोइंग। तो ये इंट्यूटिवली हो पाता है। उसको करेंगे कैसे, क्योंकि वो सब्जेक्ट है। जो नोइंग है दैट इज द सब्जेक्ट, सो वी कैन नॉट नो इट एज एन ऑब्जेक्ट। तो वो थोड़ी सी एक कठिनाई है। कहा जाता है रेस्ट इज अवेयरनेस और रेस्ट इन अवेयरनेस। तो ये अभ्यास इस तरह से कि हम अटेंशन अवेयरनेस में क्या जाग रहा है उसके सिर्फ अनित्य बोध की ओर ध्यान दे रहे हैं, और क्या जाग रहा है उसको कोई महत्व नहीं दे रहे। महत्व दे रहे हैं जानने को, जानने की क्षमता को। तो उसी को लुम्पो सवेदो कहते हैं, अवेयरनेस बिकमिंग, मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ अवेयरनेस। आज छोटा सा क्लिप मैंने लिखा है, उसको सुनते हैं। लुम्पो सवेदो का अभी रिसेंट उन्होंने प्रश्न का उत्तर दिए थे, तो छोटा सा उसका एक पूरे प्रश्नोत्तर सेशन का 2 छोटे प्रश्न, उस मेरे ख्याल से 15-1 मिनट होंगे, 12 मिनट 13 मिनट, उसको सुनते हैं तो ये बात और शायद स्पष्ट हो जाए। Connected to Galaxy Note 10 Lite. Good afternoon, Lumpal. Good afternoon, Raja Osoko. Thank you for accepting to do another video, answering a few more questions that people have. So today is Friday, the 29th of May. So the first question for today is about how to reconcile feelings like the need to be competitive to get ahead in life with the Buddha's teaching of non-attachment and non-self. Well, it's like in meditation, we're actually looking at feelings, not judging them, but observing the feeling of competitiveness is like this. And the need to feel we have to get ahead in life. Well, these are all conditions of the mind that we create and identify with. We cling to these views that I'm somebody who has to get ahead in life, or I feel competitive with my fellow workers and so forth. And this is to be observed. It is what it is. You know, you can't just feel the way you want, but you can be aware of the feeling you're having in the present moment. And I need to trust that, being aware that the feeling of competition, of wanting to get ahead, or even the feeling about the future, wanting to be successful in the future, is like this. You trust your awareness rather than the feeling, no matter how convincing or unpleasant or exciting it might be. So in the society we live in is a competitive one. So it's, you're conditioned to be competitive. The conditioning for most of us is
to try to be better than someone else. And so, this begins on the playground and in kindergarten and in school. There's always somebody stronger, bigger, better, strong, that we tend to compare ourselves with. And this is all done through thinking. Like it's really very, very important to be the observer of thought rather than the thinker. And so, because we identify so strongly with our feelings and thoughts, that these tend to take us over. And, we become what we're thinking. We, through this grasping, through this clinging to these habitual patterns of emotion, of thoughts, the words that stimulate emotions, desires that arise and cease, then we're constantly changing all the time, making value judgments about right and wrong, good or bad, or worrying about the future and regretting the past, or the whole sense of the samsara vata, or the world of suffering, is created by us through this blindness, through this habitual attachment to sankharas, to thoughts or sankharas, emotions or sankharas. Sankharas, their very nature is to change and arise and cease. So what can you do about it? You can't get rid of sankharas just because you don't want them, or we're not attacking them in the sense of annihilating them, but understanding that which is aware of sankharas is not a sankhara. So awareness, mindfulness, consciousness, aware of itself is not sankhara. Where when we identify with consciousness with the mind, then the problems arise. So no matter how ambitious you might be or lacking in ambition, whether you're, an egomaniac or incredibly vain, or you suffer from feelings of inadequacy and inferiority, these are all sankharas that, doesn't matter what quality they have, as long as we begin to use them, to see them, that which sees and recognizes the feeling of superiority is like this. If I think I'm better than you, I can be aware of it. If I see it as something that, from the ideal that we're all equal, and we're, the ideal of equality, and that's an ideal, but then if I do feel in the present moment that I'm better than you, it's not an ideal, but it is an emotion or a feeling that arises. And who is it that is aware of the presence and absence of that feeling is awareness. That's what you really are rather than what you think you are or believe you are. So it's not about judging, if you're very idealistic about equality, and then you feel superior to somebody else, then you can make value judgment that you shouldn't feel that way. You can go on into kind of self-disparagement because you see yourself as somebody who is vain or arrogant, and you shouldn't be. These are all mental conditions that we create, that they're habit patterns that we've developed through our lifetime. And what isn't a habit pattern is mindfulness. It's not a condition, it's not a sankhara, it's not a phenomenon. It is the reality of here and now. Another question is how in Buddhism we include the mind as one of the senses. So we're used to the 5 physical senses, generally speaking, and in Buddhism the Buddha often talks about the mind as a 6th sense.
Could you explain how to understand and how to practice with that, please? Yeah, Buddhism has 6 senses, where everyone else only has 5. And this is because they, the very basic reality is consciousness, which isn't a sense organ. There's no conscious sense organ. You can't, say it's your brain, or you can't show me an organ in your body that is conscious. But you can, so that consciousness is awareness, is mindfulness, and then the mind states, even the word mindfulness is misleading. So awareness is actually a better word than mindfulness, because mindfulness creates a sense of the mind as our reality, where it's consciousness, awareness in the present, here and now, that is the way out of suffering. Where in the materialist view of life, there's 5 senses. There's the eyes, ears, nose, tongue, body, and then the mind is seen as consciousness and the mind. Consciousness and the mind are lumped together. So we don't, what is consciousness and what is the mind? When we use the English word mind, it's a kind of generic term for mental phenomena. But so it can be misleading if we use consciousness. We're aware of it as not as a mental state. It's not like an emotion or it's not dependent on words or feelings or time and place. It's not bound in time. It's not as a place that you can go to, because you are conscious all the time. If I should ask you, are you conscious? You have to say, yes, you are. It's a knowing of consciousness. Consciousness isn't a sankara that you create and that has a physical organ in the body. In the West, we're very much aligned with the brain as consciousness. This consciousness, is it in the brain? Because we talk about, the brain as the seat of consciousness. But the brain is an organ of the body that, is conditioned through, it's like a computer. You condition it with cultural conditioning, social conditioning, emotional conditioning, religious conditioning. And so, you can condition the brain. And so it's our intellect. Our intellect is dependent on the function of the brain, the thinking process. But who is aware of the thinking, Are you a thought or a concept of any sort? Is awareness dependent on words, or is it just the mere presence that we're experiencing here and now? So when I use the word mind, I mean mental formations such as the feelings, the memories, the intellectual, conceptual function. These are mental states that that are sankharas. They change according to other conditions. So you get praise, you get a reward, you feel happy, you get demoted, you lose your fortune, you get depressed. These are conditions that emotions are very changeable according to other conditions, where so mental states are impermanent. So in Buddhism, the mind is more or less like you might consider it the brain or the conditioned function that we tend to identify with.
but that which is transcends or is aware of all conditioning is not a temporary state that depends on other conditions. So that's why the Buddha encourages us to see our refuges in Dhamma. The word Dhamma in Buddhism, as we use it in the Theravada tradition, means reality. And reality is consciousness here and now. So when I ask you, are you conscious? And everyone is going to say yes, but you can't show me. You can't pull out, point to an organ that's conscious, and you can't deny you can deny you're conscious, but it's rather absurd because you're present here and now, and there's this knowing that you're conscious. But that knowing is overlooked because you tend to attach to yourself always through the sankharas, the conditions, the phenomena that you believe in and have, this strong, convincing attitude that you are a mortal personality, a physical body. These are so strong, it seems so real because cultural conditioning, social conditioning, even religious conditioning supports that belief that each one of us is limited to a physical form, and that we have the personality that manifests through this form is what we are. So our personality changes according to praise and blame, success and failure. And just in the weather, you can feel happy when it's sunny and depressed when it's gloomy, because the emotions are like that. They depend on other conditions. But what doesn't depend on anything, which is Dhamma, which is ultimate reality, is consciousness. So that kind of leads to the next question. We'll stop here. 5-7 minutes जो बचे हैं, we can deeply reflect on what we have heard and then move ahead with our program.